अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 13 says in the given figure a square OABC is inscribed in a quadrant. Quadrant means 1/4 of a circle OPBQ. OPBQ. If OA is equal to 20 centimeter, this is 20 centimeter. Find the area of the shaded region. Now it is a square, means all the sides are equal. Now we'll find out the length of OB, and that will be the radius for this quadrant. If this is 20, so definitely this will also be 20. So in right angle to triangle OAB, now we'll do the solution. What is given? OA is equal to 20 centimeter. So AB is also 20 centimeter sides of square. In right angle triangle OAB using Pythagoras theorem. इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं. OB स्क्वायर will be equal to OA square plus AB square. Now OB square will be equal to 20 square plus 20 square. OB square is equal to 400 plus 400. OB square is equal to 800 and OB is equal to under root 400 into 2, that is 20 root 2. Now that is your radius. Now you can see if we will subtract the area of square from the area of quadrant, you will get the area of the shaded portion. So area of shaded portion will be equal to area of quadrant minus area of square. अब area of quadrant is 1/4 pi r square and minus area of square is side into side, and side is given 20. So it is 1/4 into pi. They have already given, use pi is equal to 3.14. So I'll write down 314 by 100, and r square means that is 800. We'll put it 800 minus 20 into 20. Now this two zeros are cancelled with these two zeros. 4 2s are 8 and 4 2s are 8, 2 6 minus 400, and that is equal to 228 centimeter square. So area of the shaded portion will be like this. So जब भी कभी आपको क्वेश्चन ये करने हैं तो आपको एक बार ऑब्जर्व करना है कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकलेगा कैसे, रेडियस कैसे निकाल सकते हैं आप इसके अंदर. मेन कंसेप्ट आपको ये रेडियस वाली बात याद रखनी है कि हाउ टू फाइंड आउट द रेडियस, अदरवाइज देयर इज नथिंग इन द क्वेश्चन. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 14 सेज AB and CD are respectively arcs of two concentric circles, means दोनों का सेंटर सेम है. एक का रेडियस है 21 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस है 7 सेंटीमीटर विद सेंटर O. सेंटर दोनों का सेम है. इफ एंगल AOB, दिस एंगल इज 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. अब यहां फिगर से अगर हम देखें, मैं बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को माइनस कर दें, सो विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. सो सॉल्यूशन, कैपिटल R radius of bigger circle, that is equal to 21 centimeter. Small r radius of smaller circle, that is 7 centimeter. Area of shaded portion, what will be area of shaded portion?
that is equal to area of bigger sector minus area of smaller sector. एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, छोटे वाला सेक्टर है जिसका रेडियस 7 है. एंड नाउ वी नो द एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर. थीटा you will write down here 30 degree. Theta is 30 by 360 minus pi small r square 30 by 360. Now you can take out common pi. 30 by 360 and r square minus r square. Now this has come as 22 by 7 into 1 by 12 and capital R is 21. 21 square minus 7 square. So 20 a square minus b square का फॉर्मूला अगर हम यहाँ यूज करें तो that is equal to 22 by 7 into 1 by 12 into 21 plus 7 and 21 minus 7. That is 22 by 7 into 1 by 12 into 28 into 14. 7 2s are 2, 6 are 2, 3s are. Now that has come 28 into 11 by 3. You can calculate it on your own. Multiply both of them and divide it by 3 up to 2 decimal places and you'll get the answer. So now let's move to the next question. Question number 15 says, in this given figure, ABC is a quadrant. This is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter. So this radius is 14 centimeter. So this is also 14 centimeter. And a semicircle is drawn. अब ये एक सेमी सर्कल और बनाया गया BC को डायामीटर लेकर के. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. अब यहां से ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि अगर इस सेमी सर्कल जिसका डायामीटर BC है उसमें से ये सेगमेंट माइनस कर दें सो विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ BC सो दैट वी कैन टेक BC एज द डायामीटर. सो लेट्स हैव द सॉल्यूशन. AC is equal to AB is equal to 14 centimeter it is given. In right triangle ABC, BC square will be equal to AB square plus AC square. So BC square is 14 square plus 14 square and BC is equal to 14 root 2. You can calculate it easily. Now BC is 14 root 2. For radius of semicircle will be half of this, yeah, it means 7 root 2. Area of shaded portion. अब इस shaded portion का क्या area आएगा? That is equal to area of semicircle with BC diameter minus area of the segment. Now we know that what is the area of segment? Area of segment is area of sector minus area of the triangle. Now area of semicircle half pi r square 7 root 2 whole square minus area of segment means area of quadrant. Area of quadrant is 1 by 4 pi r square minus area of this triangle half into base into height. So that has come 1 by 2 to 22 by 7 into 7 into 7 into 2. This 7 is cancelled, this 2 is cancelled, minus 1 by 4 into 22 by 7 into 14 into 14. 2, 2, 11 minus 98. So that has come as 22 into 7 minus 11 into 14 plus 98. 154 minus
plus 98. That is 98 centimeter square is the area of this shaded portion. So observation क्या थी कि BC कैसे फाइंड आउट करना है? क्वाड्रेंट कहते ही हमें क्लियर हो गया दैट दिस इज 90 डिग्री, मींस वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम. सो ये कंसेप्ट आपने अपने मान में, ये ऑब्जर्वेशन है इस पूरे क्वेश्चन की. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 16 says calculate the area of the designed region. ये in the given figure common between the two quadrants, दो quadrants हैं, एक ये पहला quadrant और ये दूसरा quadrant, इनके बीच में जो ये common area है और इन दोनों सर्कल्स का रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर. सॉल्यूशन, रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. विल डू द कंस्ट्रक्शन. व्हाट विल डू, हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं. इट विल डिवाइड बोथ ऑफ देम इक्वली. नाउ अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं इस पोर्शन का एरिया, सिर्फ इस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट कर लेता और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अपना काम चल जाएगा. एंड दिस पोर्शन इज द क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट के अंदर से ये जो लाइन हो जाएगी दैट विल बी अ कॉर्ड, एंड एरिया बिटवीन अ कॉर्ड एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट. अगर हम एक सेगमेंट का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सो विल गेट द एरिया ऑफ दिस होल शेडेड पोर्शन. सो एरिया जॉइन, you can give it a name A, B, C, D. Join AC. Now, area of shaded portion is equal to 2 times area of quadrant minus area of triangle. Now that is equal to twice. Area of quadrant is 1 by 4 pi r square. R is your 8 minus area of the triangle is half into base into height. That is equal to 2 into 1 by 4 into 22 by 7 into 8 minus 32. That has come as 22 into 4 into 8 minus 64. So now the calculation part I am leaving for you. I hope you will be able to calculate this much. Here we complete chapter number 12. If you feel any kind of difficulty in this chapter, please do comment me. Thank you very much.